Hello everyone. In this question, we are going to find the range of the values of the term independent of x in the expansion of this. ओके सवाल में बोला है इस चीज़ की एक्सपांसन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उसका रेंज बताना पड़ेगा, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसकी एक्सपांसन में, इस चीज़ की एक्सपांसन में जो टर्म इंडिपेंडेंट है वो निकालता हूँ। जनरल टर्म विल बी टी आर प्लस 1 10 सी आर x sin inverse alpha to the power 10 minus r cos inverse alpha by x whole to the power r. This will be the general term. Now 10 cr sin inverse alpha to the power 10 minus r cos inverse alpha to the power r x 10 minus 2r. हम चाहते हैं ये वाला टर्म x इंडिपेंडेंट बने, इसलिए x की जो पावर है उसको जीरो होना बनना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर 10 माइनस 2r विल बी 0। दिस विल गिव r इक्वल टू 5। सो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो है t6 विच विल बी 10c5 साइन इनवर्स अल्फा टू द पावर 5 कॉस इनवर्स अल्फा टू द पावर 5। अब हमें इस टर्म का रेंज निकालना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 10c5, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। ओके, साइन इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा होल टू द पावर 5। अब साइन इनवर्स अल्फा को मैं y पकड़ता हूँ। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा, देन cos inverse alpha will be pi by 2 minus sin inverse alpha which will become pi by 2 minus y. ओके, सो मैं अब एक फंक्शन बनाता हूँ एफ वाई की, जो होगा साइन इनवर्स अल्फा इंटू कॉस इनवर्स अल्फा। दिस विल बिकम एफ वाई इक्वल टू वाई इंटू पाई बाई 2 minus y. Okay, now this is fy equal to minus y square plus pi by 2 into y. Okay, domain of this function will be, look, alpha belongs to minus 1 to 1. This is given in the question. Then sin inverse alpha belongs to minus pi by 2 pi by 2. Okay, which imply y belongs to the domain minus pi by 2 to pi by 2. This is the domain of the function. Okay, now f dash y is minus 2y plus pi by 2. Okay, f dash y is this. For the maximum value and the minimum value of fy, f dash y will equal to 0. This imply minus 2y plus pi by 2 equal to 0, which will give y equal to pi by 4. This is a critical point. Okay, now we have to find if we get maximum or minimum value at this critical point. For this we have to derivative this again. So f double dash y will be minus 2. Okay, now at pi by 4 this will be minus 2, which is less than 0. So we will get maximum value f max at y equal to 5 by 4, and which will be maximum value will be minus 5 by 4 whole squared minus pi by 2, sorry, plus pi by 2 into pi by 4. Just I am putting pi by 4 here. We will get maximum value of fy at pi by 4. So I am putting y equal to pi by 4 here to get the maximum value. The maximum value will be f max at y equal to pi by 4. This will become pi square by 16 plus pi square by 8, which will be 16 minus pi square plus 2 pi square, which will be pi square by 16. This will be the maximum value. Okay, point minus pi by 2 and pi by 2 are the boundary point of this function. So I am checking at the boundary point. So f minus pi by 2 will be minus pi by 2 into pi by 2 plus
pi by 2. I am putting pi by 2 in the function. Okay, this is minus pi by 2 into pi, which will become minus pi square by 2. Okay, now look, f pi by 2 will be, I am putting pi by 2 here. This is pi by 2 minus pi by 2. This will give 0. So the minimum value will be f minimum will be minus pi square by 2. This is the minimum value. Okay, the range equal to 10c5 minus pi square by 2. Okay, this is the minimum value, whole to the power 5, 10c5, and the maximum value was pi square by 16 whole to the power 5. This will be the range, which will give minus 10c5 pi to the power 10 2 to the power 5, and this will become 10c5 pi to the power 10 2 to the power 20. So this will be the range. So here will be the correct answer. Okay.